ये बोलता हूँ इसको श्री भूपेंद्र यादव जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, और हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री बीरेन सिंह जी, और हमारा मिनिस्टर कलीग श्री सुशेंद्र सिंह, और हमारा LD के चेयरमैन श्री अस्निकुमार जी, और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एडिशनल CS MS खान जी, और हमारा PCCF और हमारा सुजीत कुमार वाजपेयी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सभी सामने में उपस्थित हमारा मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आया है, और सभी ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट and all the scholars and experts from different institutions which are related with the wetlands, and all the delegates from the different regions of the different regions, and सभी उपस्थित और मीडिया बंधु और सभी उपस्थित को मैं प्रणाम करके मैं एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि सर, मैं पहले हमारा स्टेट के प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने ऐसा इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए, वर्कशॉप के लिए हमको मौका दिया, और हमारे LDA ने ऑर्गेनाइज करने का मौका दे के हमको ऑर्गेनाइज किया, और सभी हमारे यहाँ में उपस्थित होके जो सभी सेशन में जो डिस्कशन की हुआ था, और हमारा सभी एक्सपर्ट ने भी सुझाव के साथ साथ हमको बहुत, हम जो भूल गया था, जो हम करने जा रहा है, कुछ दिशा में जाएगा, उसी के बारे में हमको बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ हमारा। और सर देखिए, हमारा तो ये वर्कशॉप जो है, आपने भी कहा था कि कोई लाइव सहभागिता मिशन, दिस इज एन इनिशिएटिव फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसी एम के साथ साथ कौन सा एम, यानी कि सभी ने जानता है कि टू सेव द इंडियाज वेटलैंड बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन एफर्ट्स, एंड दिस particular the workshop will help in raising the awareness about the critical role played by the wetlands in the water purification, the flood control, awareness, and the carbon sequestration. Sir, as we understand, as we know, the wetland plays an important role in balancing the ecosystem and maintaining the microclimatic condition of the region. It serves as a good source of for foods, varieties of the vegetations and biodiversity, good and storage and absorb the carbon dioxide. Wetlands are functioning as a good sink of the carbon dioxide, which helps in the climate change mitigation. Sir, हमारा मणिपुर में भी under the Wetland Conservation and Management Rule 2017, सो हमारा जो मणिपुर स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी 2018 में बना चुका है, और सब्सिक्वेंटली हमारा टेक्निकल कमेटी एंड ग्रीवेंस कमेटी भी बना चुका है। और सर, हमारा यहाँ में सभी जगह में जो चीज़ जो हो रहा है, आपने भी बताया था कि हमारा ऑल टुगेदर हमारा 708 वेटलैंड था हमारे शुरू में से, अभी हमारा ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन इसको बचाने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ द श्री बीरेन सिंह वी हैव टेकन मैनी स्टेप्स। और सर देखिए, हमारा यहाँ में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपने भी आपके सामने भी तो हम बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोकताक के बारे में जानता है, जो कभी हमने जो निर्णय वो डिस्कस नहीं किया था, वहाँ में जाके आपने जाके किया, लेकिन लोकताक के बारे में नो के कॉर्नर में तो आप बेहतर जानता है, लेकिन आपके सामने में बोलने में तो हमारा गलत होगा या सही होगा वो भी डरता है हम, क्योंकि आप बेहतर जानता है हमसे, क्योंकि आपका जो कंसर्न है हमारे स्टेट के लिए, ये छोड़ के हमारे इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के लिए, इकोलॉजिकली
और हमारे इकोनॉमिक और कल्चरल जो वैल्यू है हम रखता है लोकतक में, आपने ज़्यादा और रखता है, उसी को मैं हमारा दिल से मैं मानता हूँ, और आप है तो सब कुछ रहेगा, वही सोच के मैं मान के चलता हूँ, चलना चाहता हूँ मैं। तो आपने पूरा सबसे ओपनली क्या 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 है हमारा मन में, उसका भी मौका दिया। आज जो कॉन्फ्रेंस जो है ऐसा कॉन्फ्रेंस है कि अभी कभी हमने नहीं मिला। हम आपके साथ में भी वहाँ में भी गया था, 10 हाउस में भी वो मिला था, हाँ, लेकिन आपने जो किया था हर जगह पे जाके आपने वो कंजर्वेशन का काम किया। एलिफेंट कंजर्वेशन का काम आपने काजीरंगा असम में किया था, और टाइगर कंजर्वेशन का काम जो कॉन्फ्रेंस जो होता था वो आपने कर्नाटक तक में जाके किया। और अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन आप, मेरा मन में ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आपने जो आज कॉन्फ्रेंस हमको मौका दिया है करने का LDA को, तो कि आपने जो लोकतक के बारे में जो सोचा था, आप लोकतक के बारे में जो करना चाहता था, उसी को बात को लेके और सभी इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस को इम्पोर्टेंस समझते हुए आपने किया होगा, वही मेरा मन में आपको बोलना चाहता हूँ। क्योंकि और सर देखिए, हमारा सरकार ने अंडर द लीडरशिप ऑफ द बीरेन जी हमारा बहुत लेकिन दुखी है कि देखिए सर, हमारा ये लोकतक जो है हमारा सबसे फ्रेश वाटर, जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन द ईस्टर्न इंडिया है, तो विद द एरिया ऑफ द 236.21 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक भी रामसार साइट भी हो गया है कि 1990 में। उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या होता है कि मैंने आपको भी बताया था पहले कि अभी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में है। इसको हटाने के लिए हम बहुत पहले से काम करके आया है, लेकिन हमारा बीरेन जी ने भी बहुत स्टेप कदम उठाया है कि इसको बचाने के लिए। क्योंकि हमने भी हमारा जो पुराना हमारे हिस्ट्री में है कि ये हमारा तो लोकतक हमारा सेक्रेट साइट है हमारा लोगों का, इसलिए को ये बचाना और इसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से हमारा लिस्टिंग करना हमारा ड्यूटी है और काम भी है। इसके साथ साथ आपने भी बहुत सुझाव के साथ और सभी ने जो बताया था इसको रिकॉर्ड करते हुए हम करेंगे और हमको बचाएंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि आपके नेतृत्व में और बीरेन जी के नेतृत्व में हम काम कर रहा है। क्योंकि ये देखिए हर जगह में वेटलैंड का प्रॉब्लम होता रहता है, ये एक दिन में नहीं हुआ था, बहुत सालों से पहले जो हमने जो मेंटेनेंस का और इसको देखभाल नहीं किया था उसके बजाय है ये जो हम अभी जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है हर जगह में, तो वही है। लेकिन आज जो हमारा जो भगवान हमको बहुत अच्छा दिन दिया था, हमको पहले में भी दिया था, लेकिन अच्छा वो ऑल इन दोज गुड डेज वी हैव नॉट डन एनीथिंग। टुडे इज आल्सो गुड डे, सो वी हैव स्टार्टेड एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड टू डू द गुड थिंग्स फॉर आवर फ्यूचर ओनली नाउ। और सर इसमें हमारा जो काम हमारा स्टेट ने जो कदम उठाया था, इसमें से एक लेके मैं बताना चाहता हूं कि इसमें से एक्टिविटीज ऑफ तो आइडेंटिफिकेशन एंड द अपडेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस जोन बेस्ड ऑन द ग्राउंड ट्रूथ and control of the activities within the fluent zone, control of the pollution and the nutrient load flowing by the urban rivers with the construction of the 2 sewage treatment plant at Hon'ble River and in connection with some DPR also submitted for consideration and sanction. और इसके अलावा हमारा वेटलैंड शुरू से वो हमारा करते आया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन टू और जो हमारा जो कंट्रीब्यूट है स्टेट इकोनॉमिक वेल बीइंग वो बनाने के लिए, इसमें सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आर वाटर मैनेजमेंट including with cleaning and desiltation and boundary fencing with geotech pillars and catchment conservation, afforestation, spring rejuvenation, biodiversity conservation, resource development and livelihood improvement, climatic resilient farming,
eco model village, skill development on green technology, eco tourism, lake front development, ऐसा जो चीज़ें हमारे बीरेन जी के नेतृत्व में हमने कदम उठाया है कि हमारा जो एक फिशरमैन भाई ने भी बोला था इसमें से सब भी इंक्लूड किया हुआ है। तो आप एक बार हमारा साथ मिलके, हमारा LDA का चेयरमैन भी है, हम भी है, सब मिलके हम सोल्यूशन बनाएंगे। तो कि एक हमारा दिल में एक चीज़ है, हमारा भारत सरकार और चाहे तो हमारा नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारा भूपेंद्र जी हो, कोई भी एक्सपर्ट आके हमको जितना भी बात बोलेंगे, जितना भी पॉलिसी बनाएंगे, कौन इसको फॉलो करना है, कौन इसको एक करना है, हमको ही करना है। हम इस हर जो एक और हर सजेशन सुझाव और जो है दिया है उसको हम एक नहीं करने से नहीं होगा। इसलिए मेरा भाइयों जो मैं मणिपुर में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ मैं अदुना अखोगी लेरिबा अखोई प्रजा जिंगना अखोई खमिनगदबदी अखोगी गसी मिशन नमा अखोगी लाइफ की ओइबा द फ्यूचर को मिशन नमा लाइजी करिगिनो है मतमदा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल की लेरिबा एरिया के लेरिबा मीसिंग सिनतना अखोई केसमेन की लेरिबा अंत कनो कानबा ओइबा ngmoyba अदुन द मेनली क्राइ द पेरिफेरल एरिया द लेरिबा मागी लोकता के अखोई बद लेरिबा जे बाउंड्री से कन बाइब से अखोई पेरिफेरल एरिया द लेरिबा सिंगना अखोइना अमगा encroachment अखोई most problem ngasi अखोई Montrex record ta why we are in the Montrex record because of the most importantly because of the water pollution, because of the encroachment, and because of the so many factors aduga the uncontrol of the width ni sigi le posing je akhoi gi le ba adai da akhona lokta ke manung da nga phajan ba tabo ya ba do and don'ts. There are so many factors adu akhoi consideration pira kan akhoi ngasi lokta kan na ji kan ge da bani akhoi Imphal dagi we are from the Imphal but you are staying nearby to the Loktak lake, so you have to help. We can akhoi mayam idea puthok yani honorable chief minister na oiro adai paisa mayam pi bi yagani tabu tabu akhoi na kan ba habesti na akhoi initiative ki makha de lei habaje mainly ngasi asni ji ये थांग से है और इनिशिएटिव ले रहा है, कर रहा है बचाने के लिए। अदुना अखोगी मतम सांगना for the last many years they have not done anything politically, I should say politically, but we are doing something. कल भी असा दिन था, परसों भी असा दिन था, लेकिन ये असा दिन में कुछ नहीं किया था, लेकिन ये बचाने के लिए, बचाव के लिए हम आज वो कर रहा है और करने जा रहा है। इसके साथ साथ हम साथ दीजिए, हमारा साथ कोऑपरेट कीजिए, तभी तो हमारा लोकताक बच पाएगा। वही अपील है। अदुना कोई ngasi कन्मिनबा हाइबसे कोई ngasi यामना अदुगा रमसार साइड हाइबसी 1990 द पी गिबसे सि अखोगी पृथ्वी की इंपोर्टेंस इंटरनेशनल इंपोर्टेंस लेना पीबनी सेदा कोइना गानु थोंगो काइना कोइ फंगिबा अदगी ngasi कोइना तोंगान ब माइग्रेटरी बार्ड मयामा ला हर कांदा कोइना ngasi मूड खरिबा समना हर कांदा सि कोइना निंजंग बया वी कैन रिकॉल द अमर फाल्कन से अमर फाल्कन सि एवरी माइग्रेटरी बार्ड नि सि अखोगी ईस्टर्न चाइना रोम दगी लाकपा साइबेरिया बार्ड नि अदुना लाइबा पोसिंग से कोइना ngasi फजरन मेंटेन तौबनीना हर साल आता है। तो पहले में भी मिजोरम में भी आया था, नागालैंड में भी आया था, आजकल सुना नहीं है। लेकिन हमारे स्टेट में जो आने के समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मर फाल्कन आएगा तो हमारा कहावत की हमारा ये क्या क्रॉप ज़्यादा झील करता है यहाँ में। तो इसलिए तो हमारा हर जगह में मणिपुर के चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में भी अभी आना शुरू कर दिया, क्योंकि हम ख्याल रखता है और इसके लिए पूजा करता है और इसके साथ साथ हम ये फंक्शन करके सेलिब्रेशन करता है लोगों के साथ मिलके। तो अभी हमारा एक विधायक है फैजल, वो चुरचांदपुर से मोशांगलूर करके, उसने भी हमारा असेंबली में उठाया था सवाल इसका। तो हम करने जा रहे हैं। और एक चीज़ है हमारा सरकार के साथ आपके सामने में मैं लाना चाहता हूँ, हमारा जो नोंगिन था ये स्टेट बात है, ये नोंगिन हमारा जो कभी नहीं देखा, हमने भी कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी अभी हमारा जो मेहनती और डिपार्टमेंट की जो ऑफिसर लोग ने हमने एक ऑर्गेनाइज किया कि इसको ढूंढने के लिए अभी रसाई खुलेन जो है एक जगह है उखरुल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ में मिला था। अभी तो हम खुश हो गया, पहले में तो देखा नहीं था, लेकिन अभी ये खुश हो गया। हम लोगों के साथ मिलके
हम वहाँ में कम्युनिटी रिजर्व बनाने जा रहे हैं. दिस इज अंडर प्रोसेस नाउ. तो हमारे स्टेट की तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहा है और करेंगे, और हमको बार बार मौका दिया था, और हमने भी पहले हमने बोल चुका है कि आप है तो सब है, लेकिन आप रहने से हमारा कुछ फिक्र करने का नहीं है. हम मेहनत करेंगे, और हमने देखा है सर आपका मेहनती, आपका जो जगह में जाके आपने जो ऑर्गेनाइज किया था, इसका सिस्टम मैंने बहुत देख लिया, हमने भी बहुत सीख लिया, और बहुत कुछ सीखना है आपसे. और आप थोड़ा हमारे स्टेट के लिए देख के कर रहा है बहुत शुरू से. हमारे पूर्वोत्तर, नॉट ओनली द मणिपुर स्टेट, ऑल द नॉर्थर्न स्टेट, व्हाट द मोदी जी गवर्नमेंट हैज नॉट डन, ही हैज डन एवरीथिंग. और आज जो हम फेस कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? नेचर गिव अस एवरीथिंग. With the civilization of the human society, we are destructing everything, and we are losing everything now. Now this is the right time to save and restore all kind of the wetland, which is giving our life and which is giving all kinds of the importance in our society. Thank you very much. Thank you so much, Honorable Minister Forest, Environment and Climate Change, Manipur, Shri T.H. Biswajit Singh, for your gracious remarks. Now I would like to welcome Honorable Chief Minister Manipur, Shri N. Biren Singh, to kindly come forward to address the event. Ladies and gentlemen, please welcome our Honorable Chief Minister Manipur. सबको नमस्कार. हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जस्ट हम सुनना है प्रैक्टिकल मिनिस्टर से. बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी. हम होटल में आके वेलकम होम करके रिसीव किया था, क्योंकि मणिपुर उसका घर है. उसने भूपेंद्र जी ने, ऑनरेबल मिनिस्टर ने यहाँ में आके इलेक्शन कैंपेन किए, इलेक्शन जिताए, फिर सरकार बनाने के बाद गया और फिर वापस आया है आज, इसीलिए इसको वेलकम किया था. आप ताली बजाए ना एक बार. हाँ. So Honorable Minister, Environment, Forest, Climate Change, Bhupender ji, और श्री T.H. Biswajit Singh, Honorable Minister, Forest, Environment, Government of Manipur, L. Susindra Maitai, Honorable Minister, PhD, Shri M. Asnikumar Singh, Chairperson, Loktak Development Authority, M.S. Khant, Assistant Chief Secretary, Government of Manipur, Dr. Sujit Kumar Bajpai, Joint Secretary, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Dr. Joshi, Principal Chief Conservator of Forest, Government of Manipur, officials of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Government of Manipur, और जो सब नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से जो आए हुए 10 लोग, ऑफिशियल ऑफ द लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एज वेल एज फ्रॉम द साउथ इंडिया, distinguished guests and invitees, media friends. Wetlands are one of the most valuable ecosystems on earth. Everyone knows, everyone accepts it. They are crucial for maintaining biodiversity, regulating the water cycle, and mitigating climate changes. Despite their importance, wetlands are under threat globally, with over 35% having been lost in the last century alone. In Manipur also, in this teeny small state, there were many wetlands, but because of insincerity amongst the government officials and the greediness of our peoples who have exploited many wetlands. Revenue Department issues facts pata to the encroachers and converted into the homestead land. That's one big example. We in Imphal city, we are frequently facing flood because of
when the, the rainy season comes. Because there was a lake called Loktak, Lumpel Pot. But it has been encroached like anything. And even the government make construction inside the lake. That is the worst part of the government and the executive part, I should say. So regarding this, what I want to convey to all of you, the government official is very important. In Manipur, no one knows where is the reserve forest. Which part is the reserve forest, which part is the protected forest, which part is the, the wildlife sanctuary part. No one knows. Because we bureaucrats, we who are in the government, never thought about educating the peoples. Only just recently, after Modi ji come to powers, our BJP-led government comes to power in Manipur, we started knocking. Oh, ye reserve land hai, ye wo forest hai, ye wetland hai. Then hue and cry has come. Many cases has filed against the government. Because earlier we did not indicate, we did not educate the peoples properly. Isko tas mat karo, usko tas mat karo. So we should be very sincere, what I want to say, mainly, particularly in Manipur, Revenue Department, the Forest Department, we should be very sincere and transparent. One wetland that is facing particular challenges is Loktak Lake of Manipur. Sir, इसको लोकटाक को बचाने के लिए हमने नंबू रिवर को, मैन रिवर which is falling on Loktak, full of garbage. हम लोग का क्या करता है, एजुकेटेड पर्सन लोग, सिटी का आदमी लोग, दोस्त लोग, रात को मारुति कार में उसका गार्बेज डाल के लाएगा और लोकटाक रिवर में डाल देंगे, नंबुल में. तो when the rainy season comes, वो साथ ले जाके लोकटाक में डाल देता है सर, और सिल्टेशन होता है, पोल्यूशन होता है. तो इसीलिए हमने क्या किया, नंबुल रिवर रिजुविनेशन का स्कीम हमने पकड़ा है. वो ऑलरेडी इनोग्रेशन भी कर लिया है गृह मंत्री जी ने, सही मेरे को याद है. तो इसमें क्या किया, जो शिवरिया से जो पानी नंबुल रिवर में आता है उसको हमने टेप कर लिया एक पाइप में, और पाइप में ले जाके उसको हमने एक water treatment plant बनाए. Around 150 crores we expended it. I am very grateful to the central ministry. You have supported us well. तो ऐसा करके अभी now Nambul will be safe. If Nambul is safe, Loktak will be safe 50%. Another 2-3 rivers we are having now, Imphal River and Hon'ble River and the Congo River. So for these 3 rivers also, we have already submitted a proposal. We have already submitted a proposal for rejuvenation of these rivers, so that clean water can be fall in the Loktak Lake. Loktak is also home to a diverse range of plant and animal species, including the endangered Manipur brow antler deer, also known as the Sangai. यही है, एक ही है दुनिया में ब्रो एंटलर डियर मिलता है. जो डियर नॉर्मली होता है यही से होता है उसका हॉर्न, लेकिन यहाँ में जो मिलता है ये ब्रो यही से होता है. तो इसका डिफरेंस यूनिकनेस जो है, तो इसको ये भी ओनली सी लिव ओनली ऑन द फ्लोटिंग लेक्स. वो जंगल में नहीं है, हिल में नहीं है, फ्लोटिंग लेक में रहता है, उसमें ही सी डांस देयर. तो इसको भी हम बचाना है. However, the ecological, economic and cultural value of Loktak Lake is under threat. So, इसलिए, sir, recently what we have done, government has constituted one committee, cabinet subcommittee, to fence the border area. Fence, in a sense, fencing or digging. तो इसके लिए 3-man committee, cabinet subcommittee हमने बना लिया है, और we have started marking the zone of the Loktak also. उसको एकदम हम पन लगा के एकदम सेफ करके रखना चाहता है. तो इसीलिए we have started it. And earlier Loktak का we did not keep
proper budgetary provision in the budget, state budget, only hardly 1 crore, 2 crore. But when after our government comes to power with the guidance of the Honorable Prime Minister Narendra Modi, just we have started increase in the budgetary provision also, not less than around now 20, 30 crores always there. And we also has already proposed to purchase the big machineries which can be dredge out the siltated earth from inside the lake. Over the last few decades, the lake has been heavily degraded due to human activities such as pollution, overfishing, and encroachment. Encroachment is common here, happening here. The degradation of Loktak Lake has had severe ecological consequences, including the loss of biodiversity, the spread of invasive species, etc. Furthermore, Loktak Lake is also economically important for the surrounding communities who rely on the lake for fishing, agriculture, and tourism. So one of my colleagues just raised the issues of the fishing and fishermen. The government is under drafting is under process, and it will be completed very soon. The cultural value of Loktak Lake is also significant. It is considered a sacred site by the indigenous community living around the lake, who use the lake for religious and cultural ceremonies. To save Loktak Lake and others wetlands like it, there is an urgent need for effective management and the conservation efforts. One crucial step is to regulate human activities around the lake. It is very, very important to regulate human activities around the lake, such as reducing pollution, regulating fishing practice, and promoting sustainable agriculture. Just Honorable Minister Bhupender advised me, Biren, just we have to change the systems inside the lake. We should not allow even homestay inside the lake. Just recently, Honorable Minister advised me, होमस्टे में क्या होता है, पोल्यूशन होता है. अच्छी तरह से देखभाल नहीं होने से तो लोकतक लेक को खत्म हो जाएगा, फ्रेश वाटर को भी खत्म हो जाएगा. तो he advised me, and I will try to do the best things. Additionally, sustainable tourism practice can be promoted to raise awareness about the ecological, economic, and cultural value of Loktak Lake, and to generate revenue for conservation efforts. Loktak Development Authority has been doing a tremendous job in this regard. LDA over the years has grown into a professional lake management organization through the experience gained in a systematic process of capacity building at various levels to effectively respond to the challenges of managing Loktak Lake through integrated lake basin management practice. Hope that this 2 days workshop conducted under the Sabha Gita mission to conserve and manage the country's wetland will deal with the challenges that lay ahead of us in conserving the wetland of our country. As Sabha Gita mission involve local communities in conservation effort, it is only through participatory process that the mission will succeed in creating awareness about the importance of wellness, wetland and their services, including water purification, flood control, and carbon sequestration. Sir, under the able leadership of the Honorable Prime Minister, after the Modi ji has become Prime Minister in 2014, then after that, before that, the northeast part, particularly the Manipur, were never discussed and were never counted by the mainland. And they never know that where is Manipur.
But today, sir, it will be very grateful, and I will convey to all of you. Under the guidance, and I will have from the Honorable Prime Minister Modi ji, now Northeast has completely changed and marching ahead through development. Law and order situation in the entire Northeast, earlier, everyone knows that Northeast is like a disturbed state, troubled state. But now, many foreign tourists has visited, domestic tourists has visited, and since the last 6 years, Manipur has become the spot of tourists now. And I also hope that these particular meetings, today's convention, and today's Honorable Minister, I call him practical minister, because what he said, he do. And he is so convincing to others. Whenever we meet, if there is any problem or any issues, immediately he can solve the issues. That's why I call him as a practical minister. So once again, I thanks the honorable ministers and officials for coming down here and having such two-day seminar here for the very important issues. I wish you all the best. Thank you. Jai Hind. I would like to express my heartfelt appreciation to our Honorable Chief Minister Manipur for his kind address at the event. And with this, I would like to announce the release of book, Cultural Significance of Indian Wetlands, published by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So this is how the book looks like, and it has a picture of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji. And on the back side, we have the quotation by our Honorable Prime Minister. It says, "We are blessed to be a part of a culture where living in complete harmony with the environment is central to our ethos." We are pleased to present this books to our honorable guests. Cultural Significance of Indian Wetlands, released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Now I would like to welcome Honorable Union Minister, Forest, Environment and Climate Change, Government of India, Shri Bhupender Yadav, to kindly come forward to address the event. Thank you. Honorable Shri Biren Singh ji, Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Biswajit Singh ji, Honorable Minister, Shri Sachin ji, Honorable Minister, Shri Asnikumar Singh ji, Honorable Chairman, Loktak Development Authority, Additional Chief Secretary, Mr. Khan, PCCF, Mr. Joshi, and the Joint Secretary of Ministry of Environment and Forest, Shri Sujit Vajpayee ji, Khuramjari to all of you. Ladies and gentlemen, it is always pleasure to me to visit Manipur. Last year I was here for political purpose, more than continuous 6 months
in Manipur. But after that, it's a blessing of Govindev ji. 2 times I came to Manipur. Fortunately, both times there is a Ekadashi. Tomorrow is also Ekadashi. And under the leadership of our Biren Singh ji, we are very proud that under his leadership, we are successfully conducted a G20 meeting in Imphal as well as Loktak also. So Loktak is not a now tried as a national, but as a coming on the international map also. It is heartening that this workshop is being held here, and Loktak is not only famous as a largest freshwater lake in northeast India, but it's also the natural habitat of Shanghai. We know that recently we issued a booklet by our ministry that wetlands have deep connection with Indian culture and tradition. Even the Loktak is revered as a Ima. That meaning as a mother by the inhabitants of Manipur Valley, and is considered the lifeline of the state. And it's a very prestigious natural gift to the state of Manipur that the complete wetland complex spanning 469 square kilometers are the state's largest source of fish, edible plants, and fresh water. The purpose to preserve the wetland, not only to preserve the wetland only, but the life and livelihood of the local person also. Without people participation, it's not possible to conserve and preserve our wetlands. That's the reason wetland conservation and sustainable management is deeply interrelated. And it's so interrelated in our ethos and culture and also the heritage also. There has been a rich and long history of wetland conservation in India. But today, because of the expansion of cities, because of the consumption habits, because of the explosion of the population, our wetlands are in danger. But even apart from all difficulties, India achieved a significant milestone on its 75th year of independence by declaring 75 wetlands of the list of wetland of international importance of Ramsar Convention, also known as the Ramsar list. But we are committed to increase this number. We are committed to increase more awareness about the wetland. The network of Indian Ramsar sites covering approx 1.33 million hectares, over 8% of the known wetland extent of the country, is the second largest in Asia. Most of us are familiar with wetland in some form, like village ponds, lakes, marsh, and swamps. These ecosystems today are recognized as among the world's most productive environments. The ecosystems are not merely water bodies, but most conspicuous part of the landscape which perform critical functions. Wetlands are vital for our water and food security. As a kidney of landscape, wetlands receive flows of water and waste from upstream sources. They help stabilize water supplies, cleans polluted waters, protect shorelines, and recharge groundwater. The
extensive food chain and biological diversity in wetland make the biological supermarkets. Wetlands are valuable as sources, sink and transformation of a multitude of biological, chemical and genetic material. In addition, wetlands have special attributes as cultural heritage of humanity and have deep connection with our beliefs and practices. They are indeed as an important part of our natural wealth and liquid assets for development. That's the reason wetland conservation have been majorly driven by biodiversity conservation agenda and protected area approaches. It is pertinent that wetlands are mainstream in the developmental agenda. This requires integration of conservation and sustainable development of wetland within a district level plans and program prepared for different sectors such as tourism, disaster management, environment and other. It is therefore imperative to strengthen the mechanism for interagency cooperation at the district and local levels through urban local bodies and panchayats. That's the reason whenever we are inviting the persons, we want that more panchayat and local bodies be involved in that protection because that is their asset. That is their pride. And that is gift by nature to them, not any other person. And I told Biren Singh ji also, before coming to this, we discussed. I told him, we create a best infrastructure, a best tourism place, a best place which represent the culture of Manipur. People will come, stay, because good lakes give us a opportunity to live with the nature. It's give a calm also. Calmness is very much necessary for human being, and I know that's available in Manipur. Conservation of wetland cannot be the government's responsibility alone. Wetlands are essentially societal assets, with government acting as a trustee of these assets on behalf of the citizen of India. Unless the entire society participate and partner in wetland conservation, tangible change cannot be achieved. As we know that in October 2022, when World assembled in Glasgow, that was a COP26, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launched a mission Life, Lifestyle for Environment, a pro-people and pro-planet approach. We are very fortunate that tomorrow we will hearing this Man Ki Baat at Loktak. But the movement which is started by our Honorable Prime Minister is basically on the principle that mindful and deliberate utilization of natural resources instead of mindless and destructive consumption. And that's a very important aspect today to save our earth, to protect and preserve the environment. That's the reason Mission Life puts individual and collective duty on everyone to live a life that is in tune with earth and does not harm it. Wise use of wetland, which is the center tenet of the Ramsar Convention philosophy, is aligned with the Mission Life. Rapidly upscaling wetland conservation with stakeholder engagement through Mission Sahbagita, as described by Mr. Vajpayee, and mainstreaming wetland in development planning are core in India's approach to wetland conservation. And I am very happy that in last 2 days, all this aspect was greatly discussed, and today the presentation given by
our all three officers or the persons who are engaged in conducting this workshop, giving a very detailed and comprehensive futuristic plan and discussion putting here. I think what suggestion they are giving in this workshop, their suggestion are conform to our approach that whole of society and whole of government approach combinedly work together the preservation and conservation of wetland. As we know that acknowledging the importance of the conservation of Ramsar sites, Amrit Dharohar has been announced as the part of budget announcement by the central government for 2023-2024. The purpose of the mission Amrit Dharohar is to promote the conservation values of Ramsar sites. The scheme is to be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetland and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities also. So you are supreme for us, and assured by our Chief Minister also. On the World Wetland Day 2023, the Ministry launched Save Wetland campaign, which is structured as a whole of society approach for wetland conservation, enabling affirmative actions for wetland conservation at all levels of the society and involving all strata of the society. The campaign includes sensitizing people of the value of wetland, increasing the coverage of wetland mitras, ensuring that wetland conservation and management is included with development plan and program at village, city, district and state level with transparent monitoring of wetland ecosystem health and building citizen partnership for wetland conservation. Today, as I already said, that we release an important publication that highlight the cultural values of wetland, and that is very significant for us. Because wetlands is not only water bodies, it provides example of traditional knowledge, local beliefs, festivals, community practices, and folk tales related to wetland. Again, I call upon every citizen in the country to join hand with our government to secure the wetland ecosystem of our country, and I feel that especially in the northeast, where we are very near to nature, we are giving example to protect and conserve our wetland. That is a gift given by nature. We can't make, and if we are making any dam and any other thing, what a cost it is already available to us. And rest sure, the other practical thing about Loktak, I will take, that's already we organized a detailed meeting in Delhi also. We are working on that. We are very committed to provide every assistance, including Mr. Sachin's financial assistance also, to provide and protect our wetland. And one thing I make sure that all the provision according to the law in the Indian Forest Act 27 is strictly implemented, and we are ready to give a protection to the local people also within a legal means. We want that Manipur will become prosperous, and the ecotourism capacity, environment tourism capacity will be increased, a skill development activity will be increased. We are very much committed for the development of Manipur, and I feel that under leadership of Shri Biren Singh ji and his team, we are growing and growing too much. That progress of Manipur will be continued. That's my best wishes. Thagachari to all of you. I would like to extend my sincere thanks to the Honorable Union Minister
Forest and Environment and Climate Change, Government of India, Shri Bhupender Yadav, for his valuable address at the event. Ladies and gentlemen, I would like to make an announcement. Our Honorable Chairman, LDA, Shri M. Asnikumar Singh, would like to present a book to all our honorable guests. Can we have a round of applause, please? Thank you so much. Now I would request Shri A.K. Joshi, PCCF, Manipur, to kindly come to deliver the conclusion and vote of thanks. Namaskar and Khurum Jari. इस समारोह के अंत में ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का ये मौका मिला है। माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर श्री बीरेन सिंह जी, माननीय वन मंत्री मणिपुर श्री थोंगाम बिश्वजीत सिंह जी, माननीय मंत्री पीएचईडी श्री एल सुशिंदर सिंह जी, चेयरमैन लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी श्री अश्निकुमार साहब, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव एमएच खान साहब, हमारे पधारे हुए जॉइंट सेक्रेटरी सुदीप वाजपेयी साहब, सर्वप्रथम मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय श्री भूपेंद्र यादव जी के प्रति कार्यशाला के आयोजकों एवं मणिपुर राज्य सरकार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। आपका आना सर हमारे लिए प्रेरणादायक है एवं आश्वस्तिकारक है। आपके उद्बोधन के लिए और आशीर्वचनों के लिए हम अनुग्रहित हैं। We are greatly privileged to have you, sir, here with us today. Thank you very much, sir. हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी के उनके ऊर्जावान नेतृत्व एवं समस्त संरक्षण कार्यों में नेतृत्व के लिए मेरा हार्दिक आभार। Sir, we are deeply indebted to you, sir, and we express our gratitude for your dynamic leadership because, sir, under your mentorship, we are taking up a lot of steps for protection and conservation of the environment and forests of Manipur. धन्यवाद ज्ञापित है माननीय वन मंत्री श्री थोंगाम बिश्वजीत सिंह के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और सतत सहयोग के लिए। Sir, your stellar role and energetic leadership are indeed invaluable for us. I would like to thank Shri L. Sushindra Singh ji, Minister PhD, for his graceful presence today. I would also like to thank the Chairman Loktak Development Authority. उनके जो उनका initiative है for this for इस कार्यशाला के आयोजन के समस्त प्रयासों के लिए, he and his team of dynamic and dedicated workers have passionately, prepared all the preparations for this, and they are leading the project to conserve and protect the Loktak Lake. I thank the team of the Ministry of Environment and Forests and Climate Change,
represented here by the Joint Secretary, Dr. Sujit Bajpayee, and his entire team, and for their contribution in arranging this regional consultative workshop here for the restoration and integrated management of wetlands in the northeastern part of the country. I am also thankful to all the representatives of all the states, all the northeastern states who are present here, and also all of the knowledge partners and our other representations from the scientific institutions which are present, the chairman, the moderators who had given their presentations here. So at the end, I thank all staff and local organizations, the groups, the media persons present here, and everyone present for having a very successful workshop and having a very successful program. I end by thanking once again the Honorable Union Minister, Shri Bhupender Yadav ji, for gracing the occasion. The last thing that I would like to say is that I would like to remind you of this emblem slogan here, Prakritihi Rakshati Rakshataha. That is, nature protects if she is protected. I think we all should remember this, and we should all take this message that if we protect nature, then only nature will protect us. So with these words, thank you once again. Jai Hind. Thank you so much, everyone. So this is the end of the session. Now we will have the cultural show followed by dinner. I would like to thank each and every one of you for actively participating and for making this workshop a success. Please enjoy this cultural show. It will begin after 15 minutes. Also, I would like to make an announcement for tomorrow's program. So tomorrow's program will include travel at Loktak at 9 a.m. and listening to 100th edition of Man Ki Baat at 11 a.m., followed by a site visit to Loktak Lake. Enjoy your evening, ladies and gentlemen.